Okay. Alisa, what question do you have? I'm waiting for others to join. Actually, I don't have any questions in my mind at the moment. I just wanted to just attend the PT test because next month I have booked my test, so I just wanted to understand what's the meeting and what you're going to share the information. Thank you. Well, if you have an exam next month, then I think you should be the one who must be the asking the first question, because you should be like, I'm not trying to scare you, but this exam is very tough. People say it's very easy, but it's not. If you're aiming for 79 and if you want to go for immigration, this exam is very tough. It's even harder than IELTS. I have given IELTS also, IELTS academic and journal, and I've given PTE and I found PTE most difficult. For 79, for the like 8 each for superior English. So are you going for superior or for 8 each for immigration or masters for 65% marks? I'm planning. My plan is for the immigration, but my points is fine for I think 65 points are fine for my immigration. Well, And mhm. Continue. and the second and yeah, actually I was sleeping at and then I will check my Facebook and your message was there, so I just joined the call. So that's why I don't have any question at the moment. No, this is a blessing from Allah, because I would suggest that if you are going for immigration, you should try your best and try to score 8. Because as far as I know, people who have superior English are getting more boost to their profile. We generally think that, okay, we have scored this much marks, this much point, and this is enough. No, there are so many people in competition already. So why not, when you're going for it, you go for, but sometimes people are not able to score 79 in their first attempt. Like, alhamdulillah, I did it in first attempt, but I will be only very honest. I was working on it for 8 months continuously, not very regular, because I'm an assistant professor also, so I have to take classes and other activities. But like daily, I used to do one word, at least a practice. Why? Because I thought, okay, the exam is so expensive, then why not should I go for the full marks? So I used to do that. But my friend, he was applying for immigration, and like he was able to clear it in 5 attempts. So this is a very difficult exam. I would suggest that if you're preparing it, you should go for 79. Your aim should be 7. Like if you are scoring for 800, you're aiming for 800. You for 100, you will fall in 90 marks. If you aim for 90, you will fall in 80, because obviously you will be doing mistakes also, and there will be something that might not be picked up by Pearson, the AI. So you must be knowing better. But if you take my, if you ask me for advice, I would say you should go for like 279 for preparation, and you must know. I don't know if you have given mocks or not, but you should know where you are doing wrong, what mistakes are you doing in a mock, where are you leaking, so that you can do your correction right now, because 1 month is a very less time. Yeah, I got your point. But for the immigration point, I have like 8 year experience. So for the minimum points, I think 65 is enough for me. And my thought process is like different, so I will not aim anything. I just want to practice as much as I can so that I can do my best and not worry about the result. So this is my thought process. So this is how I work. Yeah, definitely. Obviously, you must be knowing better about yourself, but you must discuss with people who are there. And 65 points is not enough. I am scoring like 80, but still my chances are low, because I know there are people who sitting at 90 also, and the competition is very high. The people all over the world are applying, so maybe someone might have given you green signals. Even when I didn't wanted to go for immigration, my colleagues and everybody was saying that yes, you should go for, you are an PhD and you have higher education and you are assistant professor and everything. But I have applied for long, and I'm still waiting for EOI and the invitation.
because there is a lot of competition going on. So why should we lower the points on our, हम खुद क्यों कहते हैं कि जी इतने काफी हैं, 65 is not enough. Anyways, I cannot push you. I'm here to give feedbacks and answer the questions about PTE, but you must be knowing better. Yeah, thanks. Hmm. I'm waiting for people to join, so let's see. Yeah, it's fine. लेकिन uh, I'm not sure. Maybe you have the much knowledge about the immigration. लेकिन I have the lawyer in Australia, so and I have the sponsor as well. So we have discussed all the points I have to make. So IELTS is the not the only one, only thing to matter in the immigration point. So if you have like obviously the education and experience and all the things, so obviously if you get the minimum point, it doesn't matter if you will go for the maximum point or the minimum criteria. It's 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 okay Maybe. with that. Yeah, yeah. I also agree with that. Luck also matters. There are hundred of thousands of other things that do matter. Hmm. So, Have uh, you given any mock yet? and I haven't not given any mock. I'm just practicing for this week. I'm practicing the reading one. Uh, and I have completed like three or four question type. For example, the fill in the blank, the choose the best answer, Mhm. rearranging the paragraph. So, this is what I'm practicing this week. And next week I will be maybe practicing the listening or maybe speaking, because for the last week I was doing the speaking and my score was very poor in the speaking module. Mm. So I think I will continue next week the speaking module. Uh-huh. So which module, the question type were you lacking? Right from dictation or which one? I don't remember exactly which the question type. I think I was repeating a sentence for like three or four. There was like three or four lines, and I have to record it and repeat the sentence. And Summarize my score spoken. was very good. Summarize Uh, spoken text. yeah, not the summarize, just repeat the sentence. It was some that kind of question. Yeah, that is speaking part. No, not the listening part. Yeah, This is a yeah, speaking yeah. question, but yeah, yes, it does contribute to the speaking listening part also, and it does it gives a lot of contribution because there are 11 questions in it. So Mhm. are you So so where did you lack? Why didn't you score it? You weren't able to reproduce the whole sentence, or there were any other issue? actually, yeah, I'm not sure because sometimes I shattered uh, two. So if you can guide me on this, and second thing was like maybe my pronunciation was not very accurate. So I think that's for the reason. So if you can have the any idea uh like 3 or 4 months before I have given the IELTS. Mm-hmm. Uh, so for the reading, no, not the reading, writing, speaking, and listening, I got like six score, and on the reading I got 5.5. Mm-hmm. So if you have the idea uh, that if uh, From that your how. from your answer, I can tell that repeat sentence you are making mistakes. Maybe you are not able to reproduce the whole sentence correctly. Yeah, maybe that's the reason. Sometimes I shut it. Stutter. Uh, yeah, Uh-huh. so that was the reason why. So if you have the idea, like if I can share this thing to my PTE exam or anything, do you Well, have any idea? well, PT is all about fluency, obviously. Now, and if you stutter, that is the main enemy or foe. It's like totally negative thing you're doing. They want fluency and you are stuttering. This is not stutter. You must be meaning fumble. You must be fumbling because when you No, repeat the sentence, actually, if you don't, or do you have the stutter problem?
actually don't I don't have the any those problem, but if I get confused or That is I just fumbling. got blank or That is yeah, fumbling. then हाँ, even if I speak Urdu, ठीक है, तो मैं शटर करने मतलब जो मतलब मुझसे नहीं बोला जाता, ठीक है। you cannot अब keep up the whole complete sentence. For that, you like I would suggest if you have a problem, if you watch videos of E2 Pearson videos, that is done by हम्म, Jay. He tells you that how could you break a sentence. Like usually people in Pakistan tell you that, oh, please talk in fluency, please talk with very fast speed so you don't break any fluency. This is not necessary. People in West also, the people of white skin also do take breath, right? So they do break a sentence. They do not speak like a robot or a machine. For that, Jay, he's from the channel E2 Pearson, and you will find his videos on YouTube. He tells you how you can break a sentence. So if you have a stutter problem, or if you have a fumble problem, or you don't have the capability to keep up a complete English sentence, then you should break a sentence. But without, like he tells you very nicely that how can you do that. So this way, you wouldn't be fumbling, and you will be pronouncing the word properly, and you will be able to reproduce the content that was said in the repeat sentence. mhm. Okay. Can you please repeat in the channel name? No, there is a person, Rashid Saab, E2, please. your, just, E2, write it, E2 Pearson, Mhm. E2 PT E2. Pearson. Okay, E2 PT Pearson, and it's a channel on YouTube. And please go there and watch the speaking part. He will tell you how can you speak by breaking up sentences. So Rashid Saab, you cannot hear me because your mic is not connected. I can see on the screen. Yeah, now it's connected. Okay, I am ready to take his questions. If you could raise your hand or type a message here, then I can like come back to you. I'm unable to hear you. That is, and have you started the session? It was just a question answer session. I was just, we were just having conversation with Ali. So, okay, yes, Assalamualaikum, Rashid sir. Assalamualaikum. Walaikum salam. Yes, how are you? I'm fine, thank you. How about you? Alhamdulillah, Alhamdulillah, welcome. The pleasure is all mine. So, yes, you have any question to ask? Actually, I've given exam of PT on 8th of March, Uh-huh. and I got 63 overall. Uh-huh. And in reading and writing, I got 65, Okay. whereas in speaking, I got 61, and in listening, I got 64. Mm. So your desired So score is 65? it was, yeah, it was 65, but I'm unable to achieve that. Okay, and which template did you follow? Actually, I wrote my own template for the describe image and retail lecture. And apart from that, I didn't follow the template for essay writing, and uh, and that was all. Okay. Coming, my question, I will answer your question also, Rashid, and also from Osman Ghani. He says, ma'am, please guide about describe image and detail lecture. New templates Yes. circulating nowadays. And a rumor that all templates are not working. Okay, let me bring the reality crashing down on everyone that templates don't matter as such. Template is template. Word template means something which is simple. It is not the answer. Because the answer that uh, there is a question you are going through, read aloud is a question, repeat sentence is a question, read a lecture is a question, and you have to give the answer either by reading the paragraph or reproducing the same thing. The answer is actually the question itself. Template, the things that is written in the template is not the answer because Pearson hasn't stored your template as an answer in their data bank. So the words that you are speaking, the keywords that you are providing, which is the part of a template, is not the answer. So that's why people say templates don't work. This is not the case. जो आप बोल रहे हो वो पियर्सन का जवाब नहीं है. पियर्सन के सवालों का वो जवाब नहीं है जो आप टेम्पलेट में बोल रहे हो. पियर्सन, the answer of Pearson's question is the content that is seen on your screen.
that is shown on your screen and you have to read it. Like people, for describe image, people have memorized so many template. By the time they like have completed pronouncing or reading their template or saying the template, the time is up. So they provide very less content, the actual content which is in the picture. The only solution is template is just to help you that you are, जैसे वो कहते हैं ना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ. So template is something, a structured form to help you from where to start, what should be, how should you carry your answer, and how should you end your answer. That is the job of the template. Template is not the answer. The actual thing is that are you providing the actual content that is shown on your screen. Like for example, if there is a describe image about Apple, and you are saying that there is an informatic template in front of me, I can the template is says I can see, I can see, I can see. Okay, 15 seconds are up just saying the template, but you didn't give the enough information to the person which is shown in the picture. For example, there are at least 15 points in the picture that you were unable to give or say or read because you were concentrating on the template. People try to concentrate a lot on the template. It's not the template, it's the content. Believe me, I forgot every content that was I have memorized in the exam because I was paying more concentration on the content. Like for example, if I show you a my app uni screen and I read something and then you will figure it out, you can understand that what I'm trying to say. कहने का मकसद ये है उर्दू में कि टेम्पलेट सब कुछ नहीं है, क्योंकि टेम्पलेट में जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो पियर्सन का आंसर नहीं है. पियर्सन का आंसर वो चीज़ है, अगर आप डिस्क्राइब इमेज में जो तस्वीर के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो सिर्फ आप पढ़ लें, वो ही आंसर है. क्योंकि वो लफ्ज, वो वर्ड्स, वो रेशियोज, वो परसेंटेज जो उसने दिए हुए हैं स्क्रीन में, वो उसने अपने आंसर में फीड किया हुआ है. उसने आपका टेम्पलेट फीड नहीं किया हुआ. तो अगर आप टेम्पलेट बोलने बैठ जाते हैं तो आपका सारा टाइम टेम्पलेट बोलने में लग जाता है, और जो तस्वीर के अंदर इतना मवाद उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है वो आप 30 सेकेंड्स में नहीं बोल पाते हो, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं. असल बात ये होती है, टेम्पलेट सिर्फ एक गाइडलाइन है कि आपने स्ट्रक्चर्ड बात बोलनी है, कहनी है, मगर ज़्यादा आपका जो कंटेंट होना चाहिए या वो फ्रेजेस हैं या वो कीवर्ड्स हैं, वो तस्वीर के अंदर जो बना हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो जो कहा हुआ है वो है. और उसकी खूबसूरती ये है कि आपको कुछ रट्टा नहीं लगाना पड़ता, कुछ याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने वो चीज़ बोलनी ही सिर्फ तस्वीर से. तो अगर आपको भूल भी गया है टेम्पलेट, तो आपकी जो तस्वीर है वो आपको हेल्प करेगी. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. मैम, मैंने एक चीज़ और पूछनी थी कि लोग कह रहे हैं कि जो एआई का इसका पियर्सन का एआई है उसमें ये अपडेट हो चुका है कि अगर आप कोई चीज़ बार बार रिपीट करेंगे, कोई लफ्ज़ जैसे कि आई कैन सी फ्रॉम द इमेज, तो इस पर आपका स्कोर जो है वो आजकल वो नहीं आ रहा. और इसके अलावा मैंने वीडियो अभी रिसेंटली देखी है एलए एकेडमी की. उसमें वो कह रहा है कि 20% उसके जो स्टूडेंट्स सेम टेम्पलेट यूज़ कर रहे थे प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ, उसके बावजूद उनके स्कोर वो नहीं आया जो वो कर रहे थे कि आएंगे. तो मैम ये थोड़ी कंफ्यूजन है, इसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है फेसबुक अच्छा, पर. गुड गुड. एक्चुअली आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया है कि वो ये कह रहा है कि एक बात बार बार बोल रहे हैं वो, और आपने खुद का आईसी के वो, ये मेरी बात वही हो गई कि आपने आईसी एक दफा बोला, दूसरी दफा बोला, तीसरी दफा बोला, चौथी दफा बोला. भाई आप उसको कीवर्ड ही कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना. पियर्सन को कोई आंसर ही नहीं दे रहे हो, आईसी आंसर नहीं है. तस्वीर में कहीं पे भी आईसी ना लिखा हुआ है ना दिख रहा है. तो आप वो कहने के लिए कि बार बार रिपीट करें, मतलब आप उसी लाइन को बार बार रिपीट को ये कहना चाह रहे हैं कि जो नहीं नहीं मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई कैन सी एबीसी और आई कैन सी XYZ मैं चेंज कर रहा हूँ और उसमें मैं अपना कीवर्ड पुट कर रहा हूँ जो देखिए, रेलिवेंट है उस एड ठीक में. है. तो आई कैन सी 3 दफा आपने 3 लफ्ज वो बोले जो रिपीट है, और सिर्फ एक कीवर्ड. 3 लफ्ज रिपीट करने के बाद आपने एक नया वर्ड बोला है ना, तो नो कंटेंट तो मैम, कम हुआ. तीनों के साथ मैंने नया कीवर्ड बोला है. मैं आपको एक सीक्वेंस यही बता रहा था कि जी यही मेरा करिए ये ना, क्वेश्चन. आई कैन सी 3 वर्ड आपने कहे, ठीक है, टेम्पलेट जी के, और एक कीवर्ड बोला. फिर अगेन आपने कहा आई कैन सी, यानी कि तीन जी वर्ड आपने रिपीट करने के बाद एक नया ओरिजिनल वर्ड कहा. हाँ जी 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 ये ऐसे ही. वो ये रिपीटेशन है, ये वो जी कंप्यूटर को जी बार को सुनने को मिल रहा है. 3 लफ्ज वही बोलने के बाद आप एक नया वर्ड बोल रहे हो, ऐसे जी नहीं बिल्कुल मैम. होता. ऐसा नहीं है. तो वो इस चीज को कहना चाह रहा है कि जी टेम्पलेट को और भी यूज करना आना चाहिए, हर ओके टेम्पलेट मैम. को भी यूज करना आना चाहिए.
अभी और दूसरा क्या क्वेश्चन है, मैं अभी देख रही हूँ ऐप यूनी खोल के, मैं एक डिस्क्राइब इमेज मैं आपको पढ़ के बताना चाह रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जी राशि साहब, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मैम मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था हम्म। कि जैसे कि मैं वैसे उस्मान साहब जो हैं उनकी मतलब अगर उनकी जो बात है उसको मैं ऐड करना चाहूँ हम्म। कि मैंने एपी यूनी के ऊपर भी ये प्रैक्टिस देखी है कि उनके आंसर्स अगर डिस्क्राइब इमेज को मैंने देखा तो वो आई कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, ये एक फ्रेज उन्होंने एक उठाया हुआ है। उसके साथ मजीद एडिशन उन्होंने वर्ड्स ऐड किए, नॉट अ सिंगल वर्ड, हम्म। लाइक आई कैन सी देयर इज अ रेड कलर, हम्म। देयर इज अ रेड कलर और देयर इज अ बिग एप्पल। सो हम्म। वो एक फ्रेज को आगे से उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो जहां तक मैंने खुद टेस्ट दिया रिसेंट उसमें अपग्रेड उसमें ये, क्योंकि मैंने 8 मार्च को दिया है हम्म। तो रिसेंट, और मेरे 2-3 दोस्तों ने भी दिया है रिसेंट में, तो उसके अंदर उन्होंने ये चीज बिल्कुल मतलब उसके ऊपर कोई ऐसा मतलब नेगेटिव मार्किंग या फिर ऐसे मार्क्स आए हैं डिस्क्राइब इमेज के अंदर और उसके अंदर स्पीकिंग के अंदर। हम्म। मेरा खुद का मेरा इशू ये हुआ कि जब मैं रीड अलाउड कर रहा था तो मैं रीड अलाउड मैंने जैसे ही उसको किया मैंने वहां पे ना 1-2 मिस्टेक्स मुझसे हो गई कंफ्यूजन के अंदर, कि मैं मतलब थोड़ा सा मैं परेशान हो गया, मैं मतलब रिलैक्स नहीं था, और इस वजह से मेरी जो है ना रीड अलाउड नहीं हुआ, और उसके बाद रिपीट सेंटेंस मेरा बहुत बुरा हुआ। तो जैसे ही रिपीट सेंटेंस मेरा बुरा हुआ तो मैंने जो टेम्पलेट अपने यूज किया मतलब याद किया हुआ था उसको मैं यूज करना चाह रहा था डिस्क्राइब इमेज के अंदर, वो मैं नहीं कर सका। और सामने जो पिक्चर आ रही थी मैंने पिक्चर के मुताबिक बोलना शुरू किया तो उसके अंदर मेरे फंबल भी हुए काफी, और हम्म। मैं उसके अंदर मतलब मुझे मतलब कैप का भी मसला हुआ, और मैंने टेम्पलेट को फॉलो नहीं किया। वैसे अगर मैं टेम्पलेट को यूज कर रहा था एपी यूनी के अंदर तो मेरे 84, 85, 82 इस तरह वो रिसीव हो रहे थे मुझे मार्क्स, This लेकिन is मैं वहां पे घबरा गया। this is what I'm saying, that why I'm discourage people from using template। कि कुछ थोड़ा होता है, चीजें रटती भी नहीं है, टेम्पलेट नहीं याद रहता वहां पे। तो अगर आपने बगैर टेम्पलेट के पढ़ने की प्रैक्टिस की होती ना, तो आपको इशू ना होता, कभी भी ना होता। बिकॉज टेम्पलेट, अच्छा मैंने क्योंकि बगैर आपको टेम्पलेट आंसर ही एक तो प्रैक्टिस आपने टेम्पलेट को कैसे बोलना है उसकी की हुई थी। दूसरा, आपको पढ़ना ही सिर्फ टेम्पलेट आता था, उसको कैटर करना ही सिर्फ टेम्पलेट को आता था। आउट ऑफ द टेम्पलेट चीजों को कैसे लेके चलना है वो नहीं आता। देखिए सवाल सिंपल ये, कि वो डिस्क्राइब इमेज तीन किस्म की क्यों देता है। एक वो देता है जिसमें सिर्फ तस्वीर होती है, कुछ भी नहीं लिखा होता। एक वो देता है उसमें आधी तस्वीर होती है, आधी लिखा हुआ होता है। एक वो होती है जिस तरह की ये तस्वीर आपके सामने। वो आपको डिफरेंट तरीके से जज करना चाह रहा होता है कि क्या ये बंदा या बंदी डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ भी सकता है कि नहीं पढ़ सकता। और इतना ज्यादा डेटा बैंक है कि हर क्वेश्चन की नौयत अपनी अलग है। तो वो क्यों करता है, ताकि क्या आप एक नॉर्मल सेंटेंस बोल सकते हो खुद से या नहीं। कहीं इत्तेफाक से हम कहीं से भी कोई पिक्चर उठा के दे दे, क्या बंदा उसको देख के एक जुमला कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, विद प्रॉपर फ्लुएंसी, वो है या नहीं। तो वो टेम्पलेट के चक्कर में वो चीज रह जाती है। तो शेबू फिर कोई ठीक है, लाइक इफ आई शो यू दिस पिक्चर ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल राशि साहब, आई आस्क यू टू रीड दिस पिक्चर using your template with or without, the way you want, how would you attempt it, and then I will tell you how I will attempt it। एक्चुअली इसको मैं टेम्पलेट के साथ ही करना चाहूंगा तो जैसे भी, वैसे इट्स अप टू यू, आई गिव यू, आई। नहीं मैं अभी अभी तो फिलहाल मैं मतलब नहीं मतलब इस तरह रेडी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जस्ट पढ़ लेंगे, कोई अगर रियल कोई टाइम और एग्जाम, इट्स नॉट अ अगर रियल टाइम उस्मान एग्जाम। साहब या कोई और ट्राई करना चाहें तो प्लीज। No, okay. I would have appreciated if you would have gone for it without getting any shy. But anyways, now hear me carefully and then tell me what you. Should I? Yeah, yeah, sure, sure. Most ahead. Go ahead. Okay. Hmm. I just need 10 seconds Yeah, yeah. just to look the image. Take your time, prepare it. Most welcome. And people who in the background, can you please turn off your mic? We we don't disturb others. Who wanted to practice? Okay, thank you so much for turning off your mics.
Are we ready? I think I can start because I Yeah, don't sure. have that much to explain the image. Okay, this image shows the U.S. household number of pets they are kept. The total numbers are 84.9 million, and the most pets are dogs, which is 63.4 million, and on the second and cats are being kept the second place, which is for 2.7 million, and then on the third place and they are th- this is the freshwater fish, which is 11.5 million, and on the fourth position it's birds, which is 5.7 million. Then there are reptiles, which is 4.5 millions, and then there's horses, which is 1.6 million, and there's another category which is 5.4 million. Sorry, I think I No, no, it's been okay. very Fine, bad. fine, fine, fine. Okay. Now, before I start, I tell you what your mistake is. First, tell me it is written number of US households keeping pets. तो आपने उसको अपने में पैराफ्रेज क्यों किया? अपनी तरफ से क्यों पढ़ा? ये तो जैसा है वैसे का वैसे पढ़े. अच्छा ओके. अच्छा, इसकी दो रीजन, एक तो ये रीजन है कि मैं वो एग्जैक्टली बोलना नहीं चाह रहा था, और वजह दूसरा ये कि मैं क्यों नहीं बोलना चाह रहे? ताकि वो उनको ये ना लगे कि मैं जो लिखा है मैं वही तो चीज क्या एज हुआ? एज इट इज बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ? क्योंकि अच्छा यही मुझे जो लाइन अच्छा है यही आंसर में फीड हुई हुई है. आपने सिर्फ उसको ओके, पढ़ना था. सेकंड. एक सेकंड थिंग है कि मैंने ना अभी स्पीकिंग वाला मॉड्यूल किया नहीं है, मुझे इसका पैटर्न ओके. पता ही नहीं है। ओके. तो मैंने आपको बताया कि मैं अभी ना सिर्फ रीडिंग वाला मॉड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है. तो बेस्ट है. दैट्स द रीजन। ओके, गुड. सो तो व्हाट मुझे आई जो ट्राइंग. समझ आया ना मैंने बोल दिया। जी नहीं नहीं, बेस्ट है, अच्छा है. इनफैक्ट अच्छा है कि यू मतलब अब बिल्कुल ही यू डोंट हैव एनी नो हाउ अबाउट इट, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. वहाँ वहाँ उससे सीखेंगे, कुछ कुछ कहेगा, कुछ कुछ कहेगा, तो अच्छा है इनिशियली. द थिंग इज अगेन आई एम ट्राइंग टू हम्म से इस तस्वीर में जो भी नंबर लिखे हुए हैं, जो भी लफ्ज लिखे हुए हैं, जो भी जुमले, यही आंसर है. इसमें कुछ. मैम मैं क्या प्रैक्टिस कर सकता हूँ इसकी एक बार? हाँ, आप पढ़ लें अगर उसको पढ़ना चाह रहे हैं. जी जी जी. Number of US households was the main topic of the image, and I have to speak for 40 seconds about this image. This is a very beautiful image, and from the image I can see dogs and cats. Secondly, I can observe freshwater fish and birds. Furthermore, reptiles and horses can also be noticed. In addition, information about saltwater fish and 1.6 million is also given. One of the element is maximum and other is minimum. To conclude, the image was very informative. ओके, गुड. अच्छा, नाउ अबाउट हिज थिंग. अच्छा, मैं फिर आप इसको मैं पढ़ती हूँ, फिर आप कंपैरिजन जी. बताइएगा. आप खुद उस्मान आप बताइएगा, ठीक है? मैं Okay. इसको थोड़ा सा 1 मिनट देख लेती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर इट. I can speak. Here is an informative picture of, sorry again, here is an informative picture in front of me. It is about the number of US households keeping pets. The maximum value is total about 84.5 million. The minimum value is others, that is 5.4 million. I can see there are dogs about 63.4 million, cats 42.7 million, freshwater fish are 11.5 million. Birds are at 5.7 million, reptiles are at 4.5 million. There are also horses at 1.6 million, saltwater fish is 1.6 million. In conclusion, it is a very important picture. ठीक है, आपने नोट किया, मैंने सिर्फ पहली लाइन हियर इज एन इंफॉर्मेटिव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी टेम्पलेट की पढ़ी, और सिर्फ आखिरी लाइन इन कंक्लूजन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. बस ये दो लाइनें मैंने टेम्पलेट की पढ़ी, बाकी पूरा का पूरा मैंने जो तस्वीर के अंदर चीजें लिखी वो सारी पढ़ी. उस्मान का मसला ये था, उस्मान ने ये वर्ड्स तो सारे पढ़े. आई डोंट, उस्मान आप खुद अग्री करेंगे, आपने ये वैल्यूज जी जी वैल्यूज नहीं पढ़ी. जी मैम, बिल्कुल नहीं पढ़ी, बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है? क्यों? जी. क्योंकि आप टेम्पलेट में लगे हुए थे. देखें इस तस्वीर में जो छोटी छोटे वर्ड्स और नंबर्स लिखे यही आंसर है. आप उसको यही पढ़ के बताओ, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम में यही फीड किया हुआ है. जैसे हमारे स्कूल में अगर मैम मैथ्स का पेपर बनाती है तो उसको उसने इसके साथ की भी बनाती है कि जी इन सवालों की यही जवाब है, तो ये जो लिखा हुआ है यही जवाब है. ठीक है, आप उसको यही पढ़ के बता दो ना विद फ्लुएंसी और विदाउट एनी फंबल, उसके लिए यही काफी है. इवन इसके सबूत आप खुद ये देख सकते हो, अगर मैं इसको सबमिट करूं और ऐप यूनी का आंसर दिखाऊं तो उसने भी यही पढ़ा हुआ है. उसने सिर्फ पहली लाइन टेम्पलेट की कही है,
आखिरी लाइन टेम्पलेट की कही, बाकी सारा का सारा जो उसने आंसर है वो जो तस्वीर में लिखा हुआ वही पढ़ा है। देखें, द फॉलोइंग पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ यूएस हाउंड होल्ड्स कीपिंग पेट्स। उस्मान साहब ने ये लाइन आधी पढ़ी। देखिए, ये पूरा का पूरा जो टाइटल है, दैट इज द आंसर। फिर फ्रॉम द बार चार्ट वी कैन सी द वैल्यू ऑफ कैट इज 42.7 million. The value of dog is higher, which is 63 million. From the chart bar chart, we can see the highest value is total, which is 84.9 million. The lowest value is other, which is 5.4 million. In the bar, there are also items including freshwater fish, blah, 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 blah. In conclusion, it is a very informative picture. तो डिस्क्राइब इमेज में आप याद रखिए, आपने हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू वर्ड जरूर यूज करना है, वॉट एवर द केस। थर्ड, आपने कंक्लूजन वर्ड जरूर यूज करना है। यू हैव टू यूज कंक्लूजन वर्ड एवरीवेयर, in summarized spoken text, in summarized, not summarized written text, in summarized spoken text, in essay, in retail lecture, you have to, and describe image, you have to word the use, और नहीं तो conclusion word तो जरूर उन्होंने अपने सिस्टम में फीड किया हुआ होगा। तो जो तस्वीर में लिखा हुआ है वही आंसर फीड हुआ हुआ है उसमें। अच्छा मैम एक इतनी क्वेश्चन इम्पोर्टेंस अभी नहीं है, टेम्पलेट मैटर नहीं करता जी, कहें। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, अभी मैंने जो भी कीवर्ड्स बोले हैं, अब मैं इसको अगर वो पुराने वाले टेम्पलेट में यूज करता हूँ, मेरे वो ऐप यूनी पर 80+ आते हैं। ठीक अब है, मैं ये कैसे? जो अभी करंट जो टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ, इसमें लफ्ज चेंज भी हैं और कीवर्ड्स उतने डाल रहा हूँ, फ्लुएंसी भी मेरी मेरे ख्याल में सही है, वैसी है, लेकिन मेरे मार्क्स जो हैं वो 50 के करीब आते हैं, 60 के करीब आते हैं। देखिए, ये मैम मुझे बहुत इशू आ रहा है। ठीक है। अली साहब, आपने सवाल पूछना है, भले अनम्यूट करके पूछ सकते हो। देखिए, ऐप यूनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसका सॉफ्टवेयर इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। आप, और दूसरी बात, आप किस कंप्यूटर पे बोल रहे हो और किस उस पे बात कर रहे हो, डिवाइस पे, वो भी मैटर करती है। मैंने ऑफिशियल पियर्सन मॉक, आई डिड बाय द ऑफिशियल पियर्सन मॉक, and I used to score like not more than 77 in that official Pearson mock in my house. Why? Because I don't have the sophisticated headphones and everything. I'm not saying that you should go ahead and buy it. No, the thing is, the system over there, the artificial intelligence, the system, the devices is very sophisticated. There I got 87 marks. और घर में मेरे 77 से ऊपर कभी स्पीक में गई नहीं, क्योंकि ऐप यूं नहीं कहता है फास्ट बोलो, मुझसे फास्ट बोला ही नहीं जाता। ऐप यूनी कहता है एक खास टेम्पलेट फॉलो करो जो उनका है, मुझसे वो याद नहीं होता था। सेकेंडली, मेरा ये मानना है, और दूसरी सेकेंडली, लोग ज्यादा तेज बोलने के चक्कर में, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रैक्टिस करवाती हूँ रीड अलाउड का, रीड अलाउड तो प्रैक्टिस कोई एक पढ़ सकता है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसने क्या मिस्टेक, वो पढ़ेगा और मैं पढ़ूंगी, फिर आप बताइएगा कि डिफरेंस क्या है। एनीवन हु कुड गो फॉर अली खान, यस यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा, जो आपने चार्ट वाली इमेज दिखाई थी ना, हम्म, उसका जो आंसर था, अच्छा उसके अंदर एक पॉइंट ये था कि उसने पहले कैट का बोला है, उसके बाद डॉग का बोला है, तो ठीक उसका है। मतलब ये है कि हमें सीक्वेंस की भी इतनी हाँ, जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, उसने लफ्ज तो बोला ना, कंटेंट तो प्रोवाइड किया ना, ओके, सिर्फ ठीक है। कंटेंट आप उसको प्रोवाइड करो। नाउ यूजुअली कैन एनी, ओके, लेट मी रीड इट एंड देन यू पीपल टेल मी what you noticed from what I read. In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as super absorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, लीडिंग टू द सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स। अब मैंने एक नॉर्मल इंसान की तरह बात की, मैंने कोई इस तरह नहीं कहा इन जर्मनी ओवर 100,000 टन्स ऑफ डायपर्स एंड डिस्कार्डेड ईच ईयर रिजल्टिंग इन द वेस्टेज ऑफ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऐप क्यों नहीं इसी को मानती है। वो कहती है भाई फ्लुएंसी, उसका मानना ये है कि फास्ट पढ़ना फ्लुएंसी है, नहीं। ग्रामर रूल जो हमने प्रेप एंड वन में सीखा है कि यू हैव टू स्टॉप एट द कॉमास, यू हैव टू टेक अ पोज एट द कॉमा। सो आई रेड इन जर्मनी, फिर मैं चुप हुई। You have to take a pause for 1 second on commas because Pearson is exam which is made by English people, and for them even stopping at comma is a grammar. तो आपको वहां पे रीडिंग में मार्क्स कटते हैं अगर आप कॉमास वगैरह पे नहीं रुकते हो, ठीक है। तो वो लोगों का ये मानना है कि अगर हम कॉमास पे रुकेंगे, फुल स्टॉप पे रुकेंगे तो हमारी फ्लुएंसी टूट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फुल स्टॉप पे भी रुकना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि एक जुमला खत्म हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, the people don't know that you have to keep in mind the grammatical rules also when you are going for speaking part, because that is the part of the reading also. अगेन सवाल यह बनता है रीड अलाउड 6 किस्म के क्यों आते हैं, क्योंकि सवाल भी 6 किस्म के ही होते हैं।
एक सवाल वो होता है जिसमें कॉमास बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें एस वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसमें ईडी वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, तो आपको डिफरेंट तरीके से जज कर रहा होता है. A person who was complaining about repeat sentence, my strategy used to be I used to write initials. द पर्सन इज स्पीकिंग, और मैं हर वर्ड का पहला वर्ड लिखती थी. शुरू शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो जुमला इतना लंबा होता है कि आप भूल चुके होते हैं उसने क्या कहा. सेकेंडली, आपको जुमले में लफ्जों की सीक्वेंस नहीं याद रहती कि ही हैज गॉन और हैज ही गॉन, उसने किस सीक्वेंस में लफ्ज बोले थे. तो जब आप इनिशियल लिखते हो, सो यू राइट द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स आल्सो, दैट हेल्प्स यू प्रोनाउंस द सेंटेंस. तो अगर जुमला बहुत लंबा है तो आधे जुमले के इनिशियल्स लिख लें, साथ साथ दिमाग में रिपीट भी करते थे क्योंकि वैसे ही आप दिमाग में रिपीट कर रहे होते मेमोराइज, और आधे जुमले को याद कर लें. आधे के इनिशियल्स लिख लें अगर लंबा है बहुत ज्यादा, और आधे को मेमोराइज कर लें. दिस वे यू विल बी एबल टू, बिकॉज what I was having a discussion friend today that content matters. You have to provide enough content, relevant content to the system. लोग कहते content matter नहीं करता, वो होता था पहले. अब आहिस्ता आहिस्ता इनका जो एग्जाम है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है. पहले कीवर्ड्स काम चल जाते थे. नाउ यू हैव टू राइट फ्रेजेस इन रिपीट सेंटेंसेस आल्सो, in retail lectures also, in essays also you have to give phrases. Any question? अच्छा मैम, जो रिपीट सेंटेंसेस है, जी. मेरा जो सबसे बैड क्वेश्चंस हुए थे उसमें सबसे मतलब जो बुरा हुआ था वो हुआ था रिपीट सेंटेंसेस. हम्म. एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने जब रीड अलाउड किया रिपीट सेंटेंस मुझे इतने मतलब मैं उसको कैरी नहीं कर सका, और वो इतना मेरा बुरा हुआ जिसकी वजह से इफेक्ट हुआ मेरा डिस्क्राइब इमेज भी और रिटेल लेक्चर भी. मैंने इन दोनों में स्कोर मतलब मैं नहीं कर सका. मेरे स्पीकिंग में 61 है. हालांकि मुझे मतलब टेम्पलेट जिस तरह मैंने याद किया था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पीकिंग में मेरे सबसे ज्यादा आएंगे, लेकिन मैं स्कोर नहीं कर सका. तो रिपीट सेंटेंस का मुझे कोई ऐसी ट्रिक हो कि जिसकी वजह से मैं उसको प्रैक्टिस करूं और मैं उसको ओवरकम कर सकूं. मैं रिपीट सेंटेंस बहुत बुरा किया मेरा, कि कोई उसको, भी मिस नहीं किया. हाँ, आई वॉज टेलिंग यू ना, ट्राई टू राइट इनिशियल्स. आप ट्राई करके देखो. शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, मुझे भी लगता था कि इनिशियल्स लिखना. इनिशियल्स क्या मतलब इस बात का? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो ही का एच लिखें, फिर इसका आई लिखें, गोइंग का जी लिखें, ठीक है, ये कॉपी पे लिख लें. टू का टी लिखें, एस का स्कूल. इससे एटलीस्ट उससे आपको याद रहेगा कि उसने कौन कौन से वर्ड्स बोले थे, किस सीक्वेंस में बोले थे, और जुमला भी आपको हेल्प, ओह उसको अच्छा. रिवाइज करने में हेल्प करेगा कि जी जुमला में लफ्ज क्या क्या बोले गए थे. दैट इज इनिशियल्स. तो वैसे भी तो रट्टा लगा ही रहे ना दिमाग में याद करने के लिए, जब तक वो सेंटेंस बोलता है. तो साथ साथ उसको लिखें भी, और ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी आपकी. और तो फिर वो आपको बड़ा हेल्प करेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए. और बड़े मेरे ये लिसनिंग का पार्ट है ना? ये रिसनिंग में नहीं, इसका डिटेल लेक्चर की बात हो रही है. और इवन राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इवन राइट फ्रॉम डिक्टेशन, राइट द इनिशियल्स, सो यू विल हैव अ कंप्लीट short version of the sentence in front of you, so you will know what to write and what were the words were saying. या अगर वो स्टूडेंट्स बोल रहा है तो बड़े एस के साथ छोटा सा एस लगा दो, तो अगर आपको याद रहे कि उसने स्टूडेंट नहीं कहा था, स्टूडेंट्स कहा था. लाइक लोग कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख सकते हो. एक्स्ट्रा वर्ड्स का मतलब ये है, ये नहीं है कि आपने द आर्टिकल्स लिख दिया. नो, मतलब वो सिर्फ हेल्प करने के लिए कि अगर आप नहीं, आपको याद आ रहा है कि उसने स्टूडेंट कहा था या स्टूडेंट्स कहा था, तो आप स्टूडेंट और स्टूडेंट्स दोनों लिख लो जस्ट इन केस. ये एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब होता है. राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने का ये मतलब है. जैसे ग्रुप में मेरी एक साहब से बात हो रही थी, उसने कहा था कि उसका फोर्थ पॉइंट ये था कि जुमला लिखने के बाद आर्टिकल लिखे. मैंने कहा ये, मुझे तो उसकी वजह नहीं समझ आई, क्योंकि अ एंड द, ये जुमले के आखिर में लिखने की तुक क्या है, मुझे नहीं समझ आई. सेकेंडली, कैसे पता चलेगा अ लिखना है या एन लिखना है या द लिखना है. हेल्पिंग वर्ड